Kartik Aaryan's performances and the box office numbers of his films have made him the most sought after star of B-Town. The actor has so far worked in rom-coms, dramas, and comedies, but that's about to change as he will be soon seen in a powerful role in the upcoming action thriller titled Dhamaka. The trailer of the film was released recently, and Kartik left the audience completely shell shocked with his acting chops in the finely cut trailer. For his role in the film, Kartik has stepped into the shoes of an ex journalist caught between the quandary of conscience and his career, which took a hit following an incident. The actor leaves a fine imprint on the minds of the audience through his act in the opening scenes of the trailer. Ever since its release, the trailer has been making waves on the internet and has garnered rave reviews from critics, audience, and industry. It has registered over 38 million views across platforms. The scruffy yet polished look of him as journalist, Arjun Pathak has wowed the audience. The film's gripping narrative, clubbed with Kartik's hard-hitting portrayal, have unanimously received a thunderous applause from all around. Recently, at the trailer launch event of Dhamaka, Kartik Aaryan opened up about the shooting experience of this film. It's an intense film, of course, but the director is जैसा इनको आप अगर जनरली पर्सनली मिलेंगे ये बहुत फनी आदमी है. ये ऐसे है नहीं. इनका नाम राम माधवानी, इनकी फिल्म नीरजा, आर्या, बट ये है बड़ा कॉमिकल. सो आई थिंक वो इंटेंसिटी पूरी वहाँ पे कम हो जाती है सडनली. बट ऑफ कोर्स व्हेन वी वर डूइंग द फिल्म, उसके बीच में जब ये जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे वो बहुत इंटेंस वे ऑफ फिल्म मेकिंग था. बहुत ही सिंसेरिटी से सब कुछ हो रहा था बिकॉज वी हैड एक तो ये पेंडेमिक में सबसे पहली फिल्म थी जो बन रही थी उस टाइम. एंड उस टाइम जब आई थिंक इतने लोग अलाउड नहीं हैं कहीं पे, बायो बबल के बिना आप कहीं नहीं जा सकते थे. सो आई थिंक वो बहुत बड़ा टास्क था टू ओवरकम दैट. एंड उसके लिए प्लानिंग भी जो पूरी टीम की थी वो बहुत ऐसा था कि इतने ऐसा 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 और बहुत टू द टी प्रोफेशनलिज्म. मतलब इतना ज़्यादा था कि मैं प्रोफेशनलिज्म और सीख गया इस फिल्म में काम करते करते. तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक. लेकिन ये इट्स अगेन हिज वे ऑफ हिज 360 डिग्री सिस्टम कि लाइटिंग हो चुकी होगी, कैमराज आपको रोल कर रहे होंगे एंड यू जस्ट हैव टू एक्ट, विच इज़ नॉट जस्ट यू हैव टू एक्ट. तो बहुत बड़ा काम है. बट वो एक सिस्टम है जिसमें काम किया और ये बहुत ऐसी थ्रिलिंग फिल्म मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे एक एक या दो रूम में बन जाएगी. और मतलब मैंने स्क्रिप्ट के पहले जब ये आए तब मेरे को जब इन्होंने सुनाया तो आई वाज ब्लोन अवे कि ये ऐसा भी हो सकता है. व्हेन यू सी द फिल्म थ्रू अर्जुन पाठक's eyes and you don't go anywhere else outside the room. You just, अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे पार्किंग में कुछ हुआ है तो you don't cut to the parking. You see it through his reactions. You see, so that's the kind of film it is. And I think unique है. एक एक्टर के लिए ड्रीम है ऐसी फिल्म करना. तो मैंने I really enjoyed and I hope कि we do something else together again. Dhamaka is directed by Ram Madhwani, who is known for Neerja and the international Emmy-nominated web series Arya. And by the looks of it, Ram is all set to bowl the audience all over again. The intense action thriller follows the story of an anchor, Arjun Pathak, essayed by Kartik Aaryan, who finds himself sinking in the quicksand of deceit, loss, and trepidation after he contacted by a terrorist who issues a threat to an entire city. The film, which also stars actress Mrunal Thakur and Amruta Subhash, is set to premiere on Netflix on November 19. Apart from Dhamaka, Kartik has many impressive projects of different genres in the pipeline, some of which include Bhool Bhulaiya 2, Shehzada, Captain India and Freddy. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.